Good evening, friends. We understood some basic lookup functions so far. We talked about VLOOKUP, we talked about HLOOKUP, we talked about XLOOKUP. Today we are going to talk about grandfather of all of them. It's a kick-ass function. VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP all have one limitation. That is, you can just look up on the basis of one single value. VLOOKUP में क्या बोला हमने? Look up this value into this column, and if it is found, report or return the respective row value. HLOOKUP में हमें बोला find out this value into a row. If it is found, return something below that. XLOOKUP also did the same thing. Only condition in XLOOKUP was it was not necessary to have the column on the left hand side or a row on topmost row. What if I want an answer based on matching of two conditions? For example, let me just pull out the data. Here. Let us assume the data is something like this. It's opening. I taken just random data here. Can you see? Just a second. Let me reduce the zoom. दिखाई दे रहा होगा? The screen is not shared. Okay, sorry. Okay, you should be able to see. Let us say I have, this is some random data taken from Microsoft. I have multiple shops, or I have multiple divisions of my business, or multiple segments. So here A to G segments, and here is the data from 2015 to 2019. Let's assume this is sales data, or let's assume this is a revenue or profit or cost or any data. And I want to know, here I will enter shop name. Here I will enter shop name. Rather than entering, there can be a lot of times data entry error. I want to select a shop name. So I want to teach you how to create first a drop down box like this, where you can select in Excel a particular division. I select a division, I select a year, and automatically the sales value should come out. Automatically what should come out? Sales value should come out from this table. So right now I have selected what? Shop D 2017. Shop D 2017. This is what it is. 24,444. Niche hai. Now the actual data set can be of millions of rows. Right now I'm showcasing you on the basis of 4 columns and about 10 rows. So I have data which is just what? This much is my data. A small data set I have given, but data set can be anything to anything, and I want to create it. How can I create? How did I get this formula? No, this is first, how do I create that drop down list, which is very easy, and thereafter applying a formula. Basically आपको अगर मालूम होगा तो कोई भी जगह होती है उसका लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जो बोलते हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के हिसाब से, जोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. कोई भी जगह का जोग्राफिकल लोकेशन जो होता है गूगल मैप्स या वो यूज करते हैं, कैसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है, राइट? वैसे ही कोई भी टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर सेल होता है, उसका लोकेशन जो है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आइडेंटिफाई होता है. सो दिस 24,444, इफ दिस इज अ डेटा सेट, दिस इज अ डेटा सेट, लेट्स से आई वांट टू कॉपी, मैं ये डेटा सेट को मैं पर्पसफुली नए फाइल में लेके जाता हूँ पर्पसफुली, सो दैट आई गिव इट यू फ्रॉम स्क्रैच. मैंने कुछ डेटा सेट्स डाउनलोड किए फॉर यू पीपल टू एक्सप्लेन. यहाँ पे बाकी और सारे हैं, धीरे धीरे मैं आऊँगा, खतरनाक चीज़ों पे आऊँगा.
सो ये मेरा डेटा सेट है. ये डेटा सेट क्या है रे? हाउ मेनी रोज आर देयर? 8 rows are there. And how many columns are there? 6 columns are there, including the title column. So ये जो टेबल है उसमें ये जो 24,444 है, ये क्या है? This is nothing but fourth column, that is column D, and it is nothing but fifth row. So intersection of row and column. Exactly मुझे एक्सेल को ऐसा ही बोलना है. मुझे एक्सेल को बोलना है ऐसा शॉप और ऐसा ईयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ढूंढ के दिखा मेरे को. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉप का नाम यहाँ पे डाल दूंगा. शॉप नेम मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है ना. शॉप नेम शुड कम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिस लिस्ट, है ना. So I have to create a drop down list. So if you want to create a drop down list, you want the user to enter only from that list. He should not enter something else. It is called as data validation in Microsoft Excel. I select this, I go to data tab, and there is a data validation thing here. Remove duplicates है इधर. data validation तुमको मिलेगा किधर? तो मिल गया क्या data validation? So I click on that data validation. I click on data validation. By default, you can enter anything to anything. So by default, validation criteria is allow any value. I don't want to allow any value. I want to allow only a particular list. List कहाँ पर है वो list? मैं बोलता हूँ ये list यहाँ पर है. Right? And I click on what? Okay. हाँ, what is error alert? Stop. आगे तुम दूसरा कुछ एंट्री नहीं कर सकता. खत्म. आ गया ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन में दिख गया. समझा क्या? If I want to type instead of selection, I can type shop A. वो accept करेगा. Capital letters या small letter, it doesn't matter. I want to type something. I hit enter. What does Excel say? This value doesn't match to the validation criteria defined for this cell. Retry or cancel. Retry कर सकता हूँ मैं. And I can type what? Shop B. Accept किया. Anything that you type other than that list, it will not be accepted. Now, this helps you a lot when you want to avoid data entry error by idiot people. When you generally share the file, like when I share a Google form and I ask a roll number to be entered, people enter their name. When you want to avoid the data entry errors, you put the restriction around the data. You don't want people to change that restriction. You can protect your sheet or you can protect your cell. Left click करके यहाँ पर option होता है protection का. So I can protect a cell, format cell के अंदर protection का option है. So right now this cell is locked, but I have not put up a password. So I can put up the password for the file, and the moment I put up the password to the file, what will happen? This sheet will get locked. वो password जो होता है वो protect यहाँ पर review के अंदर I can protect what? Sheet. So what you want to protect? You want to enter the password. That password is confirmed. And then you say these are the changes. Allow users to make only these changes. जो select किया है. So moment you protect that file, you can do nothing other than that particular things. So I want to, let's say मैंने ये sheet ऐसा create किया. I want user only to select it. I don't want user to change any value in a certain area. ये value जो है ये मुझे non editable चाहिए. क्या करो? उन sheets को, उन cells को select करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ, प्रोटेक्शन में जाओ, उनको लॉक कर दो. लेकिन लॉक करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट एडिट, इट इज स्टिल एडिटेबल, बट ओनली व्हेन यू पुट अप द पासवर्ड इट विल बिकम नॉन एडिटेबल. बट राइट नाउ आई एम नॉट टीचिंग दैट. आई एम जस्ट टीचिंग यू शॉप नेम आ गया, राइट. आई सेलेक्ट अ शॉप नेम फ्रॉम द लिस्ट. लेट्स से शॉप सी एंड आई से ईयर. व्हाट इज द ईयर? आई वांट टू अगेन गो टू डेटा. I go to data validation, right? I say settings, allow value from list. List is here, right? There is no data entry error. So I select 2017, shop C and 2017. And now what do I want? I want sales for that particular year. So मुझे क्या चाहिए? I want a perfect column where the shop, or I want a row where shop C is there, and I want a 2017 column. Am I right? There is a function called as an index, and there is a function called as a match. Now today I am teaching you a formula which uses
two functions of Excel together. So far, whatever we did was a VLOOKUP one function, HLOOKUP one function, XLOOKUP one function. Here is a two functions together. Index formula करके होता है या index function. It gives you, it returns, मतलब gives you a value from a table or data set based on the row number and column number. Index टेबल बोलो कहां पर है, वो टेबल में से कौन सा रो नंबर चाहिए, कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, वो लाके देगा. लेकिन विच रो और विच कॉलम डू वी वांट टू आइडेंटिफाई, वो मैच बोलेगा. मैच रिटर्न्स अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर फ्रॉम अ डेटा सेट बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दो फंक्शंस को यूज कर रहा हूं. इज इक्वल टू, आर यू एबल टू सी दिस? आई कांट जूम मोर देन दिस, और लेट मी जूम अ लिटिल मोर. इज इट विजिबल नाउ? व्हाट आई एम टाइपिंग इज विजिबल? मैंने इंडेक्स टाइप किया. Now see the function requirements. Index, array, array मतलब टेबल. कौन से टेबल में से तुमको डेटा खींचना है? So I select what? Array. ये मेरा array है पूरा. array मतलब टेबल, हाँ ना, कॉमा. अब रो नंबर चाहिए. अब मुझे रो नंबर कौन सा चाहिए? I want such a row number where shop C is there. Shop names are in the rows. That is given by a मैथ नहीं रे गधे, मैच फंक्शन. रो नंबर आई विल फाइंड आउट यूजिंग मैच फंक्शन. तो मैंने इंडेक्स फंक्शन से मैं मैच में घुस गया. इंडेक्स फंक्शन को जो रो चाहिए वो मैं मैच फंक्शन से लाके देगा. लुकअप वैल्यू, आई वांट टू लुक अप शॉप सी. वेयर डू यू वांट टू लुक अप? आई वांट टू लुक अप हियर. आई वांट टू लुक अप हियर इन दैट टेबल. और इवन इफ यू गिव द फर्स्ट थिंग, start from the right top, because हमने टेबल में ओरिजिनली टॉप से शुरुआत किया था ना. Here I want to look, and what kind of match you want? I want a exact match. Bracket complete. अब फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ. क्यों? इंडेक्स फॉर्मूला में, see, I come back to index formula again. When I was here, it was giving me the function arguments. Can you see at the bottom? It is showing me right now function arguments of a match function. The moment I close the bracket, it goes to index function. क्योंकि इंडेक्स फंक्शन को रो चाहिए था और कॉलम चाहिए था. मैंने अब तक क्या दिया? द बोल्ड थिंग इज वेयर यू आर राइट नाउ. अरे दे दिया, रो नंबर दे दिया, लेकिन रो नंबर का मैंने क्लोज करने के लिए कॉमा देना चाहिए. आई गिव कॉमा. देखो ब्लैक कलर कहां पे गया? कॉलम नंबर पे गया, है ना. नीचे आप बोलेगे सर और एक चीज दिख रहा है, वो अलग फंक्शन है, वो मैं कभी अलग से बोलूंगा. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू बेसिक ऑफ इंडेक्स मैच. उसका एक एडवांस वर्जन भी आ चुका है, बट ये सब कंप्यूटर्स में नहीं होगा. नीचे जो दिख रहा है ना, इट माइट नॉट बी विजिबल ऑन योर कंप्यूटर. आई हैव अपडेटेड 365. कॉलम नंबर, कॉलम नंबर कहां से लाएंगे हम? मैच से लाएंगे. मैच से लुकअप वैल्यू, विच वैल्यू? 2017, मतलब ईयर लुकअप कर ले. कॉलम कहां पर है वो? लुकअप अरे इज हियर. डोंट फॉरगेट टू टेक दैट फर्स्ट कॉलम ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा जो मेन टेबल डाला था मैंने पहले, A1 to F8 टेबल डाला था मैंने. टेबल वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम A1 to F8. सो यूर सब्सिक्वेंटिंग शुड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दैट. कैसा मैच चाहिए? एग्जैक्ट. यू वांट टू गो मैड? The moment I hit, अभी ये मैच फंक्शन क्लोज किया मैंने, अब इंडेक्स फंक्शन क्लोज किया. The moment I hit enter, what Excel will do? Excel will find longitude and latitude, row column coordinates. Should I hit enter? आवाज नहीं आ रहा है. Can I hit enter? Done. आप बोलेगे सर ऊपर डॉलर था नीचे डॉलर नहीं आया. रे वो फॉर्मेटिंग रहता है रे. So you can do the formatting as currency. Formatting as what? करेंसी. अभी वो बाय डिफॉल्ट इंडिया में इसलिए रुपीज ले रहा है. यू कैन चेंज द करेंसी टू व्हाट? डॉलर. माय कंप्यूटर सेटिंग्स, लोकल सेटिंग्स होता है, वो है खत्म. अब एडवांटेज क्या है मालूम है इसका? वी लुकअप में हम एक ही चीज पे लुकअप कर सकते थे, और ऐसा रो कॉलम ढूंढ के दोनों का इंटरसेक्शन लाके देगा, ये नहीं था. ये वी लुकअप का भी बाप है. कैसे? अब मैं चेंज करता हूं, देखो. टॉप सी टू व्हाट? टॉप डी. चेंज हो गया. I change a year to 2015. Change हो गया. I try to enter 2012. It doesn't accept. तो data entry error भी नहीं हो रहा है. So perfectly when you have a huge data set और उसमें से आपको कुछ चीजें क्विकली आउटकम के लिए चाहिए. लेट्स से तुम सीए बन गए और तुम मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है और बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें से कुछ चीजें तुमको एक्सट्रैक्ट करके रखनी है. एक्सट्रैक्शन. अभी राइट नाउ आई जस्ट शोन यू 2 फिगर्स. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन लर्न इफ देयर आर मल्टीपल क्राइटेरिया. 5-6 क्राइटेरिया है. वो 5-6 क्राइटेरिया में लगा के मेरे को चाहिए, लगा सकता है तुम. आई वांट मल्टीपल क्राइटेरिया, बट टेबल के अंदर आप 2 ही क्राइटेरिया, देयर कैन बी ओनली रो एंड कॉलम. देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 क्राइटेरिया इन अ टेबल.
इन टेबल देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 क्राइटेरिया। आप बोलेंगे सर लेकिन मल्टीपल टेबल्स है और मल्टीपल क्राइटेरियाज है। हाँ, फिर ये नहीं होगा, इसका भी बहुत बड़ा बाप है। वो बाप को समझने के लिए और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, वो अभी नहीं समझेगा। उसके लिए यू नीड टू लो लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, यू नीड टू लर्न डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। वो थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, मेरे को वो 8-10 बुक्स पढ़ने के बाद समझा है। डैक्स के लिए मैंने अब तक 500-600 घंटे इन्वेस्ट किए टू अंडरस्टैंड डैक्स। मेरे पास तुम इंदौर में आएगा तो पूरा एक रूम भरा हुआ है बुक से सिर्फ इसके ऊपर। अदर थिंग्स वी डिस्कस टुमारो।